Assalamu alaikum and welcome to the third lecture on CSS essay by CSS Factory. Today we shall move on to our third step, that is constructing an outline by converting our brainstorming that we did in the previous lecture. If you haven't seen the previous lectures, please do watch them. The links are in the description. And if any of you needs individual attention, please inbox on the Facebook page, not here. So let's start by showing you a professional outline. I have it right here. This is a general outline for the essay. You can see there's this introduction, then there's this second paragraph, topics and tense 1, topics and tense 2. I'll be explaining it later. Before proceeding, although, I'd like to clarify some questions raised by students recently. It would be pertinent to mention that these students studied at some academy and later they came to me. So please pay heed and imbibe what I'm going to say. Just because a person teaching at an academy is a commissioner doesn't imply he knows how to write an essay. Don't go after this face value of stuff, Have you ever asked those teachers at academies where did they learn writing an essay? Probably not, because the fact that the teacher qualified CSS a decade ago is enough for you to pay 60,000 or I don't know how much. So don't be blind followers. Use your own brains too. English is not our language, so logic would say we should look at how native English speakers write essays, right? So anyway, there are no fixed rules for languages. ठीक है कि जो मुझे कह रहे थे स्टूडेंट्स के हमें किसी अकेडमी में सर ने कहा था कि पहली लाइन आपने ये लिखनी है, दूसरी लाइन आपने ये लिखनी है, तो for God's sake let there be some difference between arts and sciences. Language is an art, so there are no fixed rules for something which is an art. ठीक है. And moreover, if CSS Factory admins can clear CSS in first attempts without academies or references in civil service, so can you. Okay? The condition, although of minimum mental capacity and good English skills, however, stands. Okay, ji, let's move forward now. I'm going to explain this outline a little. Now, this isn't, I didn't make this. Okay? So I'll simply show you how I got to this. ये देखें, I'll just go to my browser and I'll write English essay outline. So please use your own brains as well. Don't blindly follow what a person, whoever it is, in every situation in life. Do listen to people, but do use your own brains as well. Okay? So ये देखिए, I have images for essay outlines, and the one that I followed was this one. ये essay outline, University of Tacoma. Because I was comfortable with the way this outline was, so I followed this one. और ये जिसको कुछ नहीं पता चीज़ों का, वो यहाँ पे जो है इनके मतलब भी देख सकता है. ठीक है, topics, sentences, support, transitions, conclusion. So this is where I got it from. ठीक है जी. Okay, formally moving further, let me give you a quick overview. Why did we brainstorm? We brainstormed because the essay is for 3 hours, and without brainstorming there is loss of coherence, loss of ideas, problems in connecting your flow of thought. Avoiding sudden shifts in ideas is very important. So sometimes you recall something later on but you didn't write it in the essay. So these kinds of problems you can counter them with brainstorming. So that's why we brainstormed. Second, why do we make an outline? The brainstorming gave us ideas irrespective of any organization or any order in those ideas. We were just jotting down whatever came to our minds, which was of course relevant to the topic, but we didn't care about in what order they were coming to us. For instance, कोई background से related idea था, we just wrote it. कोई statistic था, figure था, we just wrote it. That's the idea of brainstorming pretty much. You don't have to care about the order of thoughts. So outline would help placing these ideas in place. ठीक है जी. That's what an outline would do. कि जो brainstorming आपने 15-20 मिनट में की है उसको आप organize कर लेंगे अपनी outline में.
So my technique here is to make you understand how to go about an essay is कि आपने उसको पहली चीज ये कि when there are related ideas try to come up with a heading in your brain जिसके नीचे आप उन सारे related ideas को place कर सकें. ठीक है. It's all about going from general to specific and back from specific to general in an essay. अब आपका जो ऐसे है वो तीन पार्ट्स में आप उसको रफली डिवाइड करेंगे. ठीक है. हर ऐसे को वो क्या होगा. इट वुड बी अ बैकग्राउंड, देन ऐसे है क्या, टॉपिक क्या है, मसला क्या है, बीच में वो होगा, एंड द थर्ड थिंग इज वे फॉरवर्ड. तो कोई भी ऐसे लिखने में देयर आर थ्री बेसिक एलिमेंट्स. ठीक है. कि जब भी कोई चीज लिख रहे हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, फिर वो एक्चुअली है क्या, सेकंड, और थर्ड कि उसका आगे क्या होगा. ठीक है. So, to further make you understand this, I would love to give you an example. कि for instance, just imagine कि ये जो है आपका this is how your essay should be. ठीक है. आप समझ लें कि आपके एक्स एक्सिस पे टाइम हो गया. ठीक है. यहाँ पे वर्ड्स हो गए. ठीक है. तो this is how it should go कि ये वाला जो पार्ट है आपका, this part, this is your intro. ठीक है. और अभी आपके क्योंकि वर्ड्स टाइम ज्यादा है, वर्ड्स कम है, इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले भी कहा था, द फर्स्ट सेंटेंसेस, द टॉपिक सेंटेंसेस ऑफ योर पैराग्राफ शुड बी वेरी गुड बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग द रीडर वुड गो थ्रू. तो आपने उसको सोच के लिखना है. 2 मिनट लगाएं आराम से, अच्छा सेंटेंस लिखें. टॉपिक सेंटेंस आपके पैराग्राफ की शक्ल है तो वो अच्छी होनी चाहिए. तो ये आपका इंट्रो वाला पार्ट है. ठीक है. एंड दिस इज वेयर यू कम टू योर सेंट्रल आइडिया, और ये ऐसे के बीच में होना चाहिए, यानी आधा टाइम आपका गुजर गया. एंड देन देयर इज दिस कंक्लूजन पार्ट. ठीक है. कि कंक्लूड करते हुए, यानी कि जो थर्ड हिस्सा था कि वे फॉरवर्ड या जो भी उसका है. ठीक है. और यहाँ पे इंट्रो, बैकग्राउंड, सब कुछ आपके क्लाइमेक्स से पहले. सो आई होप आई मच एक्सप्लेन टू यू कि आउटलाइन जब हम बनाते हैं तो हम इसको फॉलो कर रहे होंगे बेसिकली कि हम अपनी आइडियाज को ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमारा ऐसे एक परफेक्ट कोहेरेंस वाला ऐसे हो जिसमें सारी आइडियाज और सारे फैक्ट्स फिगर्स अपनी जगह पर हों. ठीक है जी. तो लेट्स बिगिन. So here's the outline, and what's the first thing? The introduction. तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. बिल्कुल इसी तरह आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन एंड इसके नीचे जो टॉपिक सेंटेंस, अगर उस वक्त नहीं सोचा था तो अब सोच लें, 2-3 मिनट लगाएं इस पे आराम से, और ये अच्छा सा सेंटेंस होना चाहिए. ठीक है जी. ओके. So let's along the lines of this outline, let us write a topic sentence. तो हमने उसकी उस वक्त सोच लिया था अच्छा सा, तो यहाँ पे हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. हमने कहा था something like although Pakistan was a result of unprecedented struggles, persistent endeavors, and unimaginable sacrifice, although Pakistan was the result of unprecedented struggle, persistent endeavors, and unimaginable sacrifice, some issues clung to its freedom package. ठीक है जी.
Yeah, some issues clung to it as part of the package, as part of the package. ठीक है, फिर आप डॉट्स डाल दें इसी तरह आपकी बीच की फिलिंग लाइन है, because this is just an outline. ठीक है, so you can just put dots here, and if there's any filling sentence that you have, there's no issue. लेकिन मकसद यहाँ ये है कि टाइम नहीं ज़ाया करना हमने, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमने जिस तरह सिर्फ उतनी ही बात लिखी थी, अपने आइडिया को उतना ही लिखा था जितने से हमें याद रहे कि हमने क्या लिखना है, ना कि पूरे पूरे सेंटेंसेस. यहाँ पे बेशक सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन वो समझाने के लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में सिर्फ उतना ही लिखें बस जितने से आपको याद रहे कि ये मैंने क्या लिखा है. क्योंकि अगर एक लफ्ज आपने कोई लिख दिया और बाद में आपके पास जब टाइम कम बचा, आपने देखा जब उधर, तो आपको शायद जहन में ही ना आए कि आपने क्या लिखा था और क्यों लिखा था. तो इतना लिखें बस कि जितने से क्लियर हो कि क्या लिखा है. एंड आउटलाइन पे आपने ज़्यादा मेहनत करनी है. ठीक है, अब हमने बिल्कुल इसी तरह टॉपिक सेंटेंस लिख दिया अपना, और इसको पूरा लिखने का मकसद ये है कि जब आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे आपने बस यहाँ से देख के वहाँ पे कॉपी करना होगा. ठीक है जी, बीच में कोई फिलिंग स्टेटमेंट्स अगर हैं ताकि आपको दिमाग आपका चलता रहे जब आप ऐसे लिखना शुरू करें. among many others like financial and material problems, water crisis has culminated, water crisis has come up to be something our entire future is dependent on. ठीक है, and again you can put full stops. This is just an outline. This tells the reader that this is just a blueprint. It's not the real thing. The purpose of an outline is just to understand which part, which idea is discussed where. So this gives the reader an understanding that this person knows how to write an essay, कि इसने सही idea सही जगह पर place किया है. Along the same lines, let's write our thesis statement. Thesis statement और topic sentence कैसे लिखते हैं, I hope ये आपको याद ही होगा. तो अब हमने thesis statement ऐसी देनी है जो थोड़ा सा हिंट दे कि हम आगे क्या बात करेंगे. तो लेट्स हमने क्या सोचा था कि no matter how serious a crisis, national unity is something that acts like a panacea or a ultimate solution, anything that you deem appropriate. You can use any word. No matter how serious a crisis, nationality is something that acts like the ultimate solution to it. No matter if it's water or any other. No matter how serious a crisis, nationality is something that acts like a panacea, ultimate solution to it, no matter if it's water or any other. ठीक है, it's not a very good quality sentence, but my purpose here is to deliver as much as I can in the minimum possible time. So this is your first paragraph. Along the same lines, now let us write our second paragraph. Now if you look at the outline here, ये topic sentence 1 जो है, this is the topic sentence of my second paragraph. ठीक है, तो किसी भी ऐसे को हमने कितने parts में तोड़ा, background, actual body and the way forward, या फिर the solution, या फिर the conclusion, या फिर the future prediction, anything, something that is
फ्यूचरिस्टिक। तो ये जो अभी टॉपिक सेंटेंस 1 हमारे सेकंड पैराग्राफ का, दिस फॉल्स इन द बैकग्राउंड पार्ट ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा है, तो हमारा सेकंड पैराग्राफ राइट आफ्टर द इंट्रोडक्शन इट शुड बी बेस्ड ऑन बैकग्राउंड। तो हमारा बैकग्राउंड से रिलेटेड यहाँ पर क्या था? हाँ जी, हमने कहा कि जी अंडरस्टैंडिंग एनी प्रॉब्लम ऑन अ नेशनल लेवल demands that it be understood with a holistic approach that explains why a problem emerged, provided crisis the story begins in 1960। अच्छा जी ठीक है, so let's write it। There we go, understanding any problem that spanned or span at a national level requires a holistic understanding to it। For water crisis, the story begins when? Begins in 1960 when? Begins right after Pakistan's independence। ठीक है जी। Now this is a topic sentence which gives the impression that the reader is going to discuss a bit of the background as to where the crisis emerged from. So as you all know, we share the Indus River, and according to the treaty, it had been divided among Pakistan and India. 3 of the tributaries were given to exclusive use of Pakistan, while 3 were given to India. So let's see how we can construct this paragraph। अब ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया है। अब इसको देखें आप, यहाँ पे है A सपोर्ट, डिटेल एग्जाम्पल, फिर B सपोर्ट, फिर C सपोर्ट। अभी सपोर्ट क्या है? सपोर्ट इज बेसिकली ये जो A B C सपोर्ट लिखे हुए हैं, दीज आर द आइडिया 1 + 2 + 3 जो हमने वीडियोस में बात की थी प्रीवियस, कि ये रिलेटेड आइडिया। ठीक है, तो अब ये किस तरह रिलेटेड है देखते हैं। ठीक है जी, अब बैकग्राउंड है, तो यहाँ से एक चीज तो वाज़ेह हो जानी चाहिए कि वाटर क्राइसिस के लिए इंडस वाटर ट्रीटी की बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज प्रीटी मच द बैकग्राउंड इन इटसेल्फ। ठीक है, तो लेट्स से कि माय फर्स्ट बिग आइडिया हियर इज, नाउ आई एम इंडेंटिंग इट। असल में भी ऐसी इंडेंटेशन के साथ लिखना है, देखने में भी विजुअली इट लुक्स वेरी नाइस and it's pretty easy to differentiate where an idea from another। ठीक है, so I say that Indus Water Treaty, अब this is a sub point in my paragraph which is an idea in itself, तो उसकी मैंने एक heading बना दी। Now Indus Water Treaty isn't something very brief, तो उसकी मुझे फर्दर भी ऑब्वियसली मेरे पास होंगी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आई वुड से रीजंस ऑफ ट्रीटी, थोड़ा सा इसका अपना बैकग्राउंड, ठीक है, कि ट्रीटी हुई क्यों। देन आई वुड से, ठीक है, फिर आई वुड से कि जी आपका bifurcation of इंडस। ठीक है, अब इसकी मुझे फर्दर अगर मेरे जहन में कोई आ रही है तो उसको मैं इस तरह कर लूंगा कि जी मैं कहता हूँ इंडस, चेहलम एंड चनाब
given to Pakistan, ठीक है जी, and I say कि Ravi, sorry, I say Ravi, Beas and Satluj given to India allocated for exclusive Indian use. So this is how you break up an idea. ठीक है, you go about the same lines. You give a bit of a background, or if it is an extensive idea, if it requires detail to be understood. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बाद में कि जो हमने ये सारी आउटलाइन अभी तक लिखी है पैराग्राफ 2 की, अब ये बज़ाहिर बहुत थोड़े से अल्फाज हैं, लेकिन जब हम ऐसे लिखना शुरू करेंगे, हमारा और आइडिया क्योंकि एक ऑर्गेनाइज जगह पे है, अपनी जगह पे है, बिल्कुल शुरू में है ऐसे कि हमारा सेकंड पैराग्राफ है और हम उसमें बैकग्राउंड के आइडियाज लिख रहे हैं और ऑर्गेनाइज करके लिख रहे हैं। तो जब हम एक्चुअली ऐसे लिखना शुरू करेंगे, द वर्स्ट दैट कुड हैपन ओवर देयर इज कि हमारी हैंड राइटिंग खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम कोई अब्रप्शन हो हमारे ऐसे में, या फिर कोई ऐसी क्रिटिकल चीज हो जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कॉम्प्रोमाइज हो, हमारी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो। एंड अगेन यहाँ पे रिमेंबर that if you recall any fact figure related, तो you write it down then and there, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अभी अगर मैं कहता हूँ कि मुझे याद आ गया है एक, तो वो मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी, इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड I just remembered कि जी I read an article. It was written by Patricia Boyer and what she told is कि जी David Lilienthal नाम का एक बंदा था who went to the Indus region in 1951 and he for the first time proposed to World Bank कि जी कोई इसका सोल्यूशन निकालें क्योंकि ये मसला बढ़ता जाएगा। तो ये मैंने एक हार्ड फैक्ट फिगर यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। कुछ और भी अगर याद आ गया आपको तो आप लिख लें। फॉर इंस्टेंस उस वक्त वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था यूजीन ब्लैक, ठीक है। एंड व्हेन डेविड लिलियंथॉल ही टॉक टू हिम तो ही अग्रीड, और उसकी बेस पे फिर 1954 में आपका प्रपोजल बना था वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जिसको फिर अप्रूव किया इंडिया और पाकिस्तान ने। एंड फाइनली इन 1960, 6 years ऑफ टॉकिंग के बाद जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट अयूब खान दे केम टू अ कंसेंसस कि ठीक है जी हम इस ट्रीटी पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। और ये आपके जो तरबेला डैम और मंगला डैम है, ये उसी का एक नतीजा है, ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हैं, आपको एक आइडिया होगा कि जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं उनको जब हम वहां पे ऐसे के अंदर एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो हमारी कितनी बॉडी बनती जाएगी ऐसे की, ठीक है। मैं आपको मिसाल यहीं से दे देता हूँ। अब लिखा आपने सिर्फ ये है थोड़ा सा ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, बिल्कुल जिस तरह अभी ए लिखा है ना मैंने, बी में कोई और बात होगी, ठीक है। किस तरह की, जैसे जी मैं कहता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड से रिलेटेड मेरा पैराग्राफ है, तो लेट्स से juxtaposition, साथ साथ देखना किसी चीज को, juxtaposition ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान population with energy demand, ठीक है। अब ये भी इसी के अंडर है, लेकिन ये इन इटसेल्फ एक डिफरेंट आइडिया है, तो मैंने इसको बी की हेडिंग देके लिख दिया। और अल्टीमेटली ए बी सी जितने भी होंगे
वो किस चीज को सपोर्ट कर रहे होंगे? मेरे टॉपिक सेंटेंस को ही, यानी कि मेरे पैराग्राफ को। और ये सबसे बड़ी निशानी है कि आप सही लिख रहे हैं कि नहीं, कि आपके सारे अंडरलाइन पॉइंट्स दे शुड बी in relevance in coherence to your topic sentence. अच्छा, now what I would do is I would explain कि brainstorming से outline और outline से ऐसे लिखना कितना आसान होता है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कौन सी वाली, ये जो मैंने सोच समझ के लिख ली थी, अब जब मैं इसको ऐसे में लिखना शुरू करूंगा, मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये देखकर इंडस वाटर ट्रीटी, अब देखें कि मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज ध्यान से सुने, कि ऐसे में सारा नॉलेज आपका बाकी 11 सब्जेक्ट्स वाला यूज होता है। तो ऐसे की तैयारी कोई नहीं होती, उसकी सिर्फ स्ट्रक्चर की और लिखने के तरीके की तैयारी होती है। नॉलेज की तैयारी जो आपकी बाकी एग्जाम से होती है, जो 11 सब्जेक्ट्स हैं, खासतौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे के लिए। तो अब सिर्फ उन सब्जेक्ट्स से जो मुझे नॉलेज मिली थी, उसकी बेस पे मैं ये आउटलाइन बना रहा हूँ, और इसको मैं अब किस तरह एक्सपैंड करूंगा, उसी नॉलेज की बेस पे। कैसे? अब मैं ऐसे लिखना शुरू हो गया, मैंने देखा कि जी टॉपिक सेंटेंस मैंने लिख दिया है सेकंड पैराग्राफ का, और उसमें मेरा पहला सपोर्ट आर्गुमेंट है इंडस वाटर ट्रीटी। तो वहां पे भी मैं हेडिंग नहीं डालूंगा कोई, सारा कुछ वर्ड्स में लिखा होगा, इट वुड बी ऑल प्रोज, ठीक है, प्रोज, PROSE, कोई हेडिंग्स वगैरह नहीं होंगी। तो मैं लिखूंगा क्या? अब मैं देखूंगा, मैंने लिखा है इंडस वाटर ट्रीटी, नीचे मैंने लिखा है रीजंस ऑफ ट्रीटी बैकग्राउंड, ठीक है जी, बैकग्राउंड आ गया। तो मैं वहां लिखना शुरू हो गया, क्या सुने, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, this is how I would continue my paragraph after writing the topic sentence. Listen to me carefully now. According to Patricia Boyer's article, she writes on Britannica.com. In 1951, David Lilienthal, former head of Tennessee Valley Authority and the U.S. Atomic Energy Commission, visited the Indus region for the purpose of researching articles which he wanted to write for a magazine called Collier's Magazine. He suggested that India and Pakistan should work towards an agreement to jointly develop and administer the Indus River system with World Bank's advice and financing, because Pakistan and India both were not very financially strong back then. So now the person, who is it, David Lilienthal, suggested that Pakistan and India come to a joint conclusion. The then president of World Bank, Eugene Black, agreed, and in 1954 World Bank submitted a proposal for a solution to the political impasse that India and Pakistan were facing. After 6 years of talks, Jawaharlal Nehru and President Ayub Khan signed the Indus Waters Treaty in September 1960, whereby the western rivers, the Indus, Jhelum and Chenab, were given to Pakistan, while the eastern rivers of Ravi, Beas and Satluj were given to India. Funding was provided for building of dams, link canals, barrages and tube wells. Tarbela Dam and on the Indus River and Mangla Dam on the Jhelum River are notable examples of this treaty. In a significant challenge to the treaty, in 2017, India completed the building of Kishan Ganga Dam in Kashmir and another hydroelectric power station on the Chenab River, which is under conflict. ठीक है जी। तो अब ये सिर्फ एक चीज लिखने की वजह से, मैंने सिर्फ ये देखना था कि मैं सही चीज लिखूं और सही जगह पे लिखूं। नॉलेज तो मेरे दिमाग में है, तो आउटलाइन को देख के मैंने देखा रीजंस ऑफ ट्रीटी बैकग्राउंड, तो उसमें मैंने साथ थोड़ा सा ये भी लिख दिया ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या लिखना है। और याद वही चीजें रखनी है हमने जो क्वालिटी वाली, जिसमें कोई नाम हो, जिसमें कोई साइटेशंस हो, जिसमें फिगर्स हो, स्टेटिस्टिक्स हो। तो सिर्फ एक छोटी सी आउटलाइन की वजह से मैंने कितनी सारी इंफॉर्मेशन अभी बोली है आपके सामने, ये मैं वहां लिख दूंगा। सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग एन आउटलाइन, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरा पर्पस आप लोगों को फॉलोअर्स बनाना नहीं है, ठीक है, जैसे अकेडमीज में ज्यादातर होता है, मुझे नहीं पता, आई हैव नेवर बीन टू वन, बट फ्रॉम द पेरेंट आई थिंक कि वहां पे आपको फॉलोअर बनाया जाता है, आप लीडर्स बने, ठीक है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अगर आपने एक दफा कॉन्सेप्ट किसी चीज का समझ लिया है, आप खुद करें इसको, ठीक है, आप गलत करेंगे, एक दफा करेंगे, 2 दफा करेंगे, अल्टीमेटली सीखेंगे। तो आप अपने आप को एक लीडरशिप वाले स्टाइल में ग्रूम करें, और
इस चीज़ के मैं आपसे कोई पैसे भी नहीं मांग रहा, आपके भलाई की बात कर रहा हूँ, तो काइंडली थिंक अबाउट इट, ठीक है जी, कि खुद को सेल्फ डिपेंडेंट करें, सेल्फ रिलाय करें अपने आप पे, एंड inshallah you will do good. So let us end this lecture here, and I hope the central idea of an outline is clear to you, और इसका फ़ायदा भी आपको नज़र आ गया होगा कि हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग के रफ आइडियाज़ को और कन्वर्ट कर दिया उसको एक ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन में, ठीक है जी। तो आई थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग, एंड इंशाल्लाह सी यू वेरी सून।